In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum to everyone and very good morning to all of my dear students. I am your teacher of subject English. So let's start today's lecture. First of all, let me tell you about day and date. So dear students, today is 18th of December 2020 and day is Friday. Okay. Let's move on to see the topic of today's lecture. You can see here it's Unit 7 poem My Doves. You must be very familiar with this poem as we have just finished the reading and the exercise work as well. Okay. Topic of today's lecture is long question answers. It means that today we are going to do the long question answer related to the Unit 7, which is a poem My Doves. Here you go, you can see the initial page of the My Doves. I'm going to just give you a brief theme. Even I don't think so that I should tell you much today, because you must have the whole theme of the poem as well in your mind. Okay, but let me tell you a bit. Actually, My Doves comprises on the main character, which are the flock of doves. Okay, यानी कि इसमें in this poem we found a group of doves who actually used to visit to the chamber window, which are opposite of the chamber parliament. And then you can see that the flock of doves actually used to come to the ledge of the window, and there they sit turn button, because they know that they will get the breadcrumbs over there, who is being strewn by the poet. Okay, and then they start to flutter and fro when the poet saw them. And then when the poet strew the breadcrumbs, and then he hid himself behind the curtains, and then he start to describe or praise the doves. Okay, which you know very well, which is most of given on the first passage. Okay, and that the how poet is praising the doves, about the little rosy tripping feet, twinkling eyes and fluttering wings, cooing voices which is low and sweet, and he's assuming the doves as friendly as their neighbors. Okay, or as graceful to meet them. Well, student, you can see here the long question answers. We are going to do the long question answer. You can see here, number 1 is how are the doves described in the poem. ठीक है, क्या आपने ये आंसर देना है कि डव्स जो हैं, फाख्ताएँ हैं, उनको पोइम में किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है. सो द आंसर इज़, एवरीवन लिसन मी केयरफुली, द डव्स मीन्स डव्स, ज़्यादा फाख्ताएँ, आर डिस्क्राइब्ड, उन्हें बयान किया गया है, एज हैविंग शाइनिंग नेक्स, के उनकी चमकती हुई गर्दन है, स्नोई फैदर्स, बर्फ़ जैसे उनके पर हैं, लिटिल रोज़ी, छोटे से गुलाब जैसे, ट्रिपिंग फीट है यानी कि जब वो चलती हैं तो उनके पाँव से ट्रिप ट्रिप करने की बात आती है, ट्रिपिंग फीट हैं, ट्विंकलिंग आइज़ हैं, और बड़ी चमकदार आँखें हैं जो ट्विंकल करती हैं, एंड फ्लटरिंग विंग्स, और फड़फड़ाते हुए विंग्स. ओके, दिस वे the doves have been described in the poem. Again I am telling you the answer. The doves are described, यानी कि doves को बयान किया गया है as having, कि उनके पास है shining necks, snowy feathers, पहले उनकी necks को कहा गया, फिर उसके बाद उनकी feathers को, उनके पर, फिर little rosy tripping feet, छोटे छोटे से पाँव हैं उनके, twinkling eyes हैं, and fluttering wings हैं. Okay, next is the poet happy to see the doves. क्या जो पोइट है, शायर है, वो बहुत खुश है इन फाख्ताओं को देखकर. हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता चलेगा, यानी कि हाउ वी विल लेट नो दैट द पोइट इज़ वेरी हैप्पी टू सी द डव्स. सो द आंसर इज़ द पोइट इज़ हैप्पी, पोइट जो है वो बहुत खुश है, टू सी द डव्स, फाख्ताओं को देख कर, बिकॉज शी वॉचेस दैम डेली, क्योंकि वो उन्हें डेली देखती हैं. ठीक है,
शी ऑल्सो सेज, वो ये भी कहती है डैट दे फील हर लव, कि वो उनका प्यार जो है वो फील कर सकती है. इज़ द पोइट हैप्पी, क्या पोइट हैप्पी है टू सी द डव्स, डव्स को देखकर. हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता चलता है. सो द पोइट इज़ हैप्पी, पोइट जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है टू सी द डव्स, डव्स को देख कर. बिकॉज शी वॉचेज दैम डेली, शी वॉचेज दैम, इट मीन्स इट्स द Loisa May Alcott. It's the girl. The poet name is Loisa. So वो फीमेल है, ठीक है. शी वॉचेस देम डेली, बिकॉज क्योंकि वो उन्हें रोज़ देखती है. एंड फुल स्टॉप. शी ऑल्सो सेज, वो ये भी कहती है डैट दे फील हर लव, कि वो उनका प्यार जो है वो महसूस कर सकती है. एंड क्वेश्चन नंबर 3 यू कैन सी हियर, हाउ डज द पोइट गेट द डव्स, किस तरीके से जो पोइट है वो डव्स की तरफ पहुंचता है. टू सिट ऑन हर विंडो लेज, कि वो किस तरीके से पोइट जो है वो डव्स को कहता है कि वो उसकी विंडो की लेज पर आकर बैठे हैं. इफ़ यू सी द बुक पेज नंबर 80, सो यू विल सी द लेज ऑफ द विंडो एज वेल वेयर द डव्स आर सिटिंग. ओके, तो ये कैसे होता है, किस तरीके से पोइट ऐसे करता है. सो द आंसर इज द पोइट गेट्स द डव्स, जो पोइट शायर है, गेट्स द डव्स, वो फाख्ताओं को बुलाता है या बैठने देता है, यानी कि उन्हें इजाज़त देता है, उन्हें बैठने देता है. लेट द पोइट एक्चुअली लेट द डव्स टू सिट ऑन हर विंडो लेज, कि वो उसकी विंडो के लेज पे बैठे रहें. बाय प्लेसिंग क्रम्स ऑफ ब्रेड ऑन इट, बाय प्लेसिंग रख कर, क्रम्स ऑफ ब्रेड ऑन इट, यानी कि ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े वहाँ पर रख के विंडो लेज पर वो पोइट जो है वो ब्रेड क्रम्स को स्ट्रू कर देती है. she just spread the breadcrumbs on the window ledge, so that the doves can sit and can visit and sit on the window ledge. Okay, that's all for today's lecture, dear students. The thing which you need to do is that you have to watch the video very carefully, and then if you want to take the screenshot of the given question answer so you can take it, then you have to open your notebooks and make sure that you have drawn the margin line on it, and then start to writing by putting the date on it, and then unit number is I guess it's 7, and then write the unit name, which is my doves, and in the bracket write poem, and then topic, then write the topic in the third line. Then start to write on question number 1. When you finish the question number 1 along with the answer, leave one line empty, and then leave one line, and then go to the next line, and then give the question number 2. Okay, and start to write question number 2 answer. And after finishing the question number 2, you have to write the question number 3. So dear students, all of you have to do only this work. You have now 2 days off, Saturday and Sunday are off. Have a nice weekend. Remember me in your prayers. Take care of yourself. Allah Hafiz.